Wonderful. So guys, I would just request you all to keep your systems, mobile phones, laptops on mute जब आप बात नहीं कर रहे हैं. और I will try to keep it in Hindi and English. लेकिन अगर आप लोगों को कोई चीज समझ ना आए, do let me know. You can ask me and I can repeat it. That is not an issue. तो आज हम एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी की बात करेंगे. अब जो मेरे पास फॉर्म्स आए हैं, इन अ वे इट इज अमेजिंग दैट आप लोग पार्टिसिपेट कर पाए एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी दैट. सेकंड, आई वाज लाइक कि सब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ऑल दैट इज हैपनिंग, बट नोबडी हैज बिन इनटू मेंटल हेल्थ थेरेपी, इमोशनल हेल्थ थेरेपी. साइकोलॉजिस्ट के पास कोई नहीं जा रहा है, थेरेपिस्ट के पास कोई नहीं जा रहा है. और मे बी आप जा रहे होंगे एंड यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, बट यस, मेजॉरिटी मैंने देखा नहीं है. क्योंकि जब भी कोई इलनेस होता है ना, वी आर सो फोकस्ड ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. ये डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी है, ये दर्द शुरू हो गया, ये नया चीज शुरू हो गया, ये चेंज आ गया है. But we forget that physical health and mental health are connected. It's like if you are focusing on your physical health and you ignore your mental health, physical health में जितना improvement आना चाहिए उतना नहीं आएगा. Same चीज vice versa mental health के साथ भी है. So we always have to make sure that we are taking care of both the things. मेंटल हेल्थ का भी और फिजिकल हेल्थ का भी, ये दोनों एक साथ जाता है. अगर आप रात को अच्छे से नहीं सोएंगे तो काफी लोग एसिडिटी बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशंस बोलते हैं, सुबह होता है. अगर आप ज्यादा सोते हैं तो काफी लोग डाइजेस्टिव इश्यूज बोलते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच कनेक्टेड. हमारे थॉट्स और हमारे बिहेवियर बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. अब एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी क्या होता है? सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन. I am not very much of a, PPT person, but थोड़ा सा ACT, जिसको हम ACT थेरेपी कहते हैं. What is this? आप जब पैदा होते हैं ना, when we all are born, we are born with feelings. We are not born with thoughts. हम सब जब पैदा होते हैं feelings के साथ पैदा होते हैं, thoughts के साथ नहीं. हमारा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है ये काफी डेवलप्ड होता है. राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इमोशनल हेल्थ. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है हमारा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, लॉजिक, रीजनिंग, रैशनैलिटी, एनालिसिस. ठीक है. अब जब हमारा राइट ब्रेन डेवलप्ड आता है तो दैट मीन्स फीलिंग्स तो हम बचपन से ही होती है. ऊपर वाला ही हमें फीलिंग्स के साथ भेजता है कि आप में से, मैं तो नहीं गई हूँ दुकान पे बोलने के भाई प्लीज मुझे आधा किलो गुस्सा दे दो, 1 किलो खुशी दे दो, 1 पाव थोड़ा सा गिल्ट दे दो. नहीं ना, बिकॉज एवरीथिंग इज विद इन अस. वी आर बोर्न विद ऑल दीज थिंग्स. वी डोंट गो एंड बाय इट. जैसे बीमारियां नहीं खरीद के लाते, बीमारियां भी हमारे अंदर ही पनपती है, बट वैसे ही फीलिंग्स तो हमारी इनबॉर्न होती है. एम्बैरेसमेंट भी उतना जरूरी है, गिल्ट भी उतना जरूरी है, शेम भी उतना जरूरी है जितना जरूरी हैप्पीनेस, बीइंग कंटेंट, जॉयफुल, प्रोडक्टिव है. अगर ये चीजें, अगर मेरे अंदर गिल्ट नहीं होगा, एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, सैडनेस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? आई वुड नॉट बी एबल टू बी राइट और बी अ डिसिप्लिन और डू थिंग्स, आइडियल थिंग जो मुझे करनी चाहिए. बिकॉज गिल्ट ही नहीं है ना, शेम ही नहीं है, एम्बैरेसमेंट ही नहीं, तो कोई वैल्यूज ही नहीं होंगे हमारे. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि ऐसा नहीं कि मुझे दुनिया ने गिल्ट दिया है, सैडनेस, पेन, ये सब किसी ने नहीं दिया है मुझे, ये मेरे अंदर है. और ये तब तक बाहर आएगा जब जब इसकी जरूरत है. अब सिचुएशन इसको ट्रिगर कर. सो फीलिंग्स आर नॉट नेगेटिव. नंबर 1, थॉट्स आर नेगेटिव. हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारी सोच नेगेटिव हो सकती है, हमारी सोच ऐसी हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए. बट फीलिंग्स आर नॉट नेगेटिव. फीलिंग्स कैन बी प्लेजेंट, अनप्लेजेंट. आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट थॉट्स कैन बी दैट, और इवेंट्स कैन बी नेगेटिव.
ओके, सो एसीटी में हम क्या करते हैं? एसीटी का पहला काम होता है हम अपने इमोशंस को वैलिडेट करें। मान लीजिए, ओके, आई एम समबडी हु आल्सो लिव्स विद इलनेस, मैंने आप लोगों को बताया है, इट्स अ रेयर इलनेस। अब इस रेयर इलनेस के साथ मानिए मेरा पार्टनर मेरे साथ रहता है और दे आर लिविंग विद मी, और कभी कभार उनको आता है यार क्या है, व्हाट डिड आई साइन अप फॉर, रोज की परेशानी, रोज का डॉक्टर, रोज की बीमारी। सो व्हाट डिड दे फील? दे फेल्ट अपसेट, दे फेल्ट रिजेंटफुल टुवर्ड्स मी। इज दिस रॉन्ग? नहीं, गलत कैसे है ये? अगर रोज मेरे घुटने में चोट लगी रहेगी, मैं रोज कह सकती हूँ नहीं नहीं मैं तो कर रही हूँ उसके लिए, अच्छा करो, कभी तो मोमेंट आएगा ना मैंने बोला यार मैं ही क्यों, व्हाई मी? तो सेम थिंग एज अ केयर टेकर अगर आपको कभी लगता है कि व्हाई मी, मेरी जिंदगी डिफरेंट होती अगर मेरी जिंदगी में ये नहीं होता, या आई विश आई कुड हेल्प देम बेटर, आई विश आई कुड टेक देयर पेन अवे, डोंट रन फ्रॉम दैट फीलिंग, दैट फीलिंग इज योर ओन फीलिंग। और अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, छी 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 छी, ये तो मुझे कितना खराब इंसान बना रहा है, तो आप तो इंसानियत को ही चैलेंज कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट एसीटी टीचेस अस। एसीटी कहता है कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो द वे दे आर। आप उसके बाद उसको रिप्रोग्राम जरूर कर सकते हो, बट पहले एक्सेप्ट करोगे। मान लीजिए मेरे हाथ में चोट है, जब मैं मानूंगी मेरे हाथ में चोट है तभी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, तभी मैं उसका इलाज कर सकती हूँ। जब मैं मानूंगी ही नहीं कि मेरे हाथ में चोट है तो मैं कभी इलाज ही नहीं करूंगी उसका, तो वो ठीक होगा क्या? वो तो उल्टा खराब ही होता जाएगा ना। सेम थिंग, आपको पहले मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये फीलिंग है। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग बट इट इज अ फीलिंग। मुझे फील हो रहा है ऐसा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे हेल्पलेसनेस हो रही है, मुझे पावरलेसनेस हो रही है, मुझे हो रही है ये सब चीजें, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पहली बात वो चीज हमें करनी पड़ेगी। नाउ सो एक्सेप्टेंस इसका पहला पार्ट है कि हमें एक्सेप्ट करना है जो हो रहा है। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होती है कि मैंने एक्सेप्ट किया मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मुझे यहाँ पे आ रहा है, दिस इज माई प्रेजेंट मोमेंट, आई एम गेटिंग एंग्री। व्हाट इज मेकिंग मी गेट एंग्री? आई एम गेटिंग एंग्री, सब लोग बाहर जा पा रहे हैं, शादी में गए हैं, कहीं गए हैं, बट आई एम नॉट एबल टू, मुझे गुस्सा आ रहा है उस बात का। ओके, ठीक है, तो क्या मेरे लिए शादी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए इस पर्सन के साथ अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहना? तो आपने क्या किया? आपने एक्सेप्ट किया जो आपने फील किया और फिर आपने उसको माइंडफुली रैशनलाइज किया, या आगे पीछे जो भी हो सकता है, मे बी आपको लगेगा नहीं शादी में जाना ज्यादा जरूरी है, तो हमेशा बीमार रहते हैं, व्हाट डू आई डू अबाउट इट? और आई विश आई कुड गो फॉर द वेडिंग, आई सो वांट टू गो फॉर द वेडिंग, लेकिन मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है, तो हेल्पलेसनेस है ना, तो उसको हमें करना पड़ता है। जो कुछ चैलेंजेस रेयर इलनेस वाले लोग सफर करते हैं, उनको फिजिकल हेल्थ का पूरा सपोर्ट मिलता है, बट मेंटल हेल्थ कोई नहीं समझ पाता है। क्यों? मोस्टली मेंटल हेल्थ के जो सिम्टम्स होते हैं वो इमोशनल ये फिजिकल हेल्थ के साथ कनेक्ट होते हैं। इरिटेशन, इरिटेशन तो आपको तब भी होती है अगर आप घर पे ज्यादा देर तक रहे, आप किसी बीमारी के साथ रहे, या आपके बॉडी में डिफिकल्टीज आ जाए, या आपको बार बार प्रोसीजर्स कराने पड़ रहे हैं। सैडनेस, अप एंड डाउन वो भी आ जाएंगे, एसिडिटी, डाइजेस्टिव इश्यूज वो भी आ जाएंगे, माइग्रेन वो भी आ जाएंगे, पीसीओडी, थायराइड, फिर डायबिटीज, ये सारे कौन, तो इसलिए काफी लोगों को टाइम लगता है डिप्रेशन और एंजाइटी डायग्नोज करने में, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स बोलते हैं ये तो सीधी, ये तो इस बीमारी के लक्षण है, यही होता है, ये तो सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, सो दीज आर दीज। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी मच कनेक्टेड, दैट इज द रीजन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट डायग्नोज्ड फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन रेयर इलनेसेस। बट आप माने कोई भी इंसान अगर एक क्रॉनिक इलनेस के साथ रहते हैं ज्यादा देर तक, इट इज दे आर बाउंड टू हैव इमोशनल इंस्टेबिलिटीज, बाउंड, इसलिए उनको कंटिन्यूस अपनी थेरेपी कराते रहनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाते रहना चाहिए, या वेलनेस कोच, लाइफ कोच, जो भी।
सम इमोशनल हेल्थ सपोर्ट उनको मिलना चाहिए. सो डॉक्टर्स तो हमें कर लेते हैं. दीज आर लाइक सर्टेन थिंग्स आई हैव पुट डाउन हियर. और अगर डिप्रेशन होता है लेडीज में, काफी बार देखा गया है कि उनका बोन मिनरल डेंसिटी भी रिड्यूस होता है. अगर आपको बार बार हड्डियों के इश्यूज आते हैं, बोन इश्यू आते हैं, कैल्शियम इनसफिशिएंट होता है, तो आपको डिप्रेशन के लिए भी चेक करा लेना चाहिए. So this is something we will have to see. Now I already told you about emotions. Emotions क्या है? हमारी पूरी जिंदगी ना इस ट्रायंगल में चलती है. And I am being honest about it. मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में. ये जो ट्रायंगल है ना, ये ऐसा है. अब मेरे को एक बीमारी है. अब मेरी बीमारी ये है और मुझे थॉट आता है कि यार मेरी जिंदगी कैसी है, क्या बीमारी, सुबह दवाई, शाम को दवाई, ट्रीटमेंट ले लो, मैं और लोगों की जैसे नहीं जी सकती, क्या फायदे. मेरा थॉट है. दिस इज थॉट आई हैव. थॉट जैसे आएगा, फीलिंग क्या आएगी? सैड, इरिटेटेड, एंग्री, अपसेट. क्यों? क्योंकि थॉट क्या था? अरे मेरी जिंदगी कैसी है, मैं तो बीमारी रहती हूँ, दवाई लेनी है, क्या मैं औरों जैसी नहीं हूँ. तो फीलिंग तो ऑब्वियसली वैसी आएगी ना. एंग्री, सैड, इरिटेशन, हेल्पलेसनेस. अब अगर एंग्री, सैड, इरिटेशन, हेल्पलेसनेस मेरी फीलिंग है, हाउ डू आई बिहेव देन? मैं जाके डांस तो नहीं करूंगी, अच्छे से दवाई तो नहीं खाऊंगी, अच्छे से डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट तो नहीं लूंगी, क्या करूंगी मैं? आई वुड बी लाइक, अरे मेरे को नहीं जाना बाहर. इफ somebody even tries to talk to me, I will just shoo them away. Why? Because I'm not feeling right. मेरे घर में 2 डॉग्स हैं और उनमें और आप सब में एक ही फर्क है. अगर उनका पेट खराब होगा, आई विल गिव देम मेडिकेशन. द मिनट उनको फिजिकल हेल्थ बेटर होगा, दे विल स्टार्ट प्लेइंग. लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब होगी, मैं कितना भी ख्याल रखूं, मैं कितनी भी दवाई दूं, आप फिजिकली कितना भी ठीक करें, शायद आपका मूड उसके बाद भी ठीक नहीं होगा. क्यों? बिकॉज योर राइट ब्रेन इज मोर एक्टिवेटेड, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, दे आर एनिमल्स, है ना. तो वही चीज ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. जैसे आपकी सोच वैसी आपकी फीलिंग, जैसा आपकी फीलिंग वैसा आपका बिहेवियर. ये जिंदगी इसी में चलती है. थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, थॉट, फीलिंग, बिहेवियर. उस बिहेवियर से फिर थॉट आएगा, फिर फीलिंग आएगी, फिर बिहेवियर आएगा. ये ऐसे ही चलता रहेगा. सो इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस CBT, बिहेवियर, फीलिंग्स. हाँ. नाउ जैसे मैंने बोला, कुछ फीलिंग जो होती है, ओवर थिंकिंग आती है जब हम बीमार होते हैं या हमारे आसपास बीमार इंसान होता है. ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ लॉस, अगर इनको कुछ हो गया, फियर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, टाइम, फिनेंसेस, रिलेशनशिप्स, बहुत कुछ, है ना. फियर ऑफ लॉस रहता है. अनसर्टेनिटी, बिकॉज पता नहीं कब क्या होगा. इंसोम्निया, नींद अच्छे से नहीं आती है, डिस्टर्ब स्लीप रहती है. फिनेंशियल इश्यूज और लो कॉन्फिडेंस. ये कुछ इश्यूज रहते ही रहते हैं. लेकिन इसके बाद आप मुझे बोलेंगे और आप लोग क्या चैलेंजेस फील करते हैं. नाउ अगर मैं ओवर थिंक करती हूँ तो मेरे को नींद अच्छे से रात को नहीं आती है. नींद अच्छे से नहीं आती, एसिडिटी, डाइजेस्टिव इश्यूज, ये बहुत कॉमन है. ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है अगर जो लोग रात को नींद अच्छे से नहीं लेते. अगर फियर ऑफ लॉस रहेगा, हार्ट पैल्पिटेशन, रेसिंग, पाउंडिंग, ब्रेथलेसनेस, ये जरूर होगा, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं. तो ये फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ ऐसे कनेक्टेड है. नाउ इससे पहले कि हम और आगे इसको करें, आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग. आज क्या आप सबके पास पेन एंड पेपर है? आई होप यू ऑल हैव इट. I will show you a trick how you can work on yourself. आप पहले ये 5 क्वेश्चंस हैं. ये 5 क्वेश्चंस आप सब लिख लें अपने नोटबुक में. What happened? The event of the day. It can be one event or more than one event. Second question would be, how did it make you feel? Third question would be, and then how did you behave? Actions क्या थे?
Fourth would be, how would you like to feel instead of what you felt then? और लास्ट है, how would you behave that could change the results or outcome then? Please do let me know अगर नहीं लिखा अभी. I can just put it back. हो गया, सबने लिख लिया? Stop sharing. हाँ. अब ये 5 क्वेश्चंस मैंने जो आप लोगों को लिखा है, व्हाट इज दिस? सो क्या कोई आप सब में से कोई अपनी सिचुएशन मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे? यू कैन रेज योर हैंड. देयर इज एन ऑप्शन आपके विंडोज में हाथ रेज करने का. यू कैन रेज योर हैंड. कोई शेयर करना चाहेगा? वंडरफुल पारुल. आपको हम अनम्यूट कर देते हैं. आपको अनम्यूट खुद करना पड़ेगा. यस. Okay. So, I would like you to, just give me little brief what you have been feeling lately. या कोई एक सिचुएशन के बारे में आप बोले कि कैसा लग रहा था आपको? Okay, I last 2 years back, 2.5 years back, I went for this Vipassana meditation course, and it is a meditation. It is a way of living, and it is a way to clear your mind, clear our minds. So I'm going there only to clean up my mind. And when I come back, I feel very peaceful for a couple of months. And then the baggage comes up again, and then I want to go again to do the same. So when I don't get permission to do that, I feel very upset for a few days. It's not like I have to go, or I can't live without it or something like that, but I feel I should go once in every 6 months for 10 days with family permission, with their willingness. And last time I went was 2 years back, and after that I couldn't get permission to go. So kind of back off. So what do we do? That must be hard. The main reason is my daughter with tuberous sclerosis, and nobody is ready to take care of her for 10 days. Okay. That is a challenging situation. ठीक है, अब हम इसको करेंगे जैसे अब आप. तो what जो भी पारुल ने बोला, what she said is the first question. What happened? The event. इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, इन्होंने बताया कि कैसे विपासना इनको हेल्प करता है और कैसे इनको परमिशन नहीं मिल रही है रिसेंटली, विलिंगनेस नहीं है, कैसे कोई बच्चे का ख्याल रखने के लिए नहीं है. So she has not been able to go for last 2 years. है ना? This is the first question. What happened? The event. Now, second, I'm going to ask her now. Now, how does it make you feel that you have not been able to go, even though you want to? How does it make you feel? Just feelings. For a few days, I feel very angry.
So I take out my anger on everything. And because I can't take out on the elders, I tend to take out on my child most of the times. So I understand that it's a negative thing, and I'm working on it. But somehow I'm not able to control many of the things. Yes. Now, first of all, आपको जो the feeling you get, that is anger. Right? This anger mostly is the tip of the iceberg. I'm going to share again one thing here. Okay. Are you able to see this? Now you see, anger is there, angry. यहाँ लिखा है ना? अब angry के अंदर कितने सारे emotions हैं? 2 circles are there. Let down, humiliated, bitter. उसके नीचे betrayed, resentful, disrespected. I want you to choose 5 or 10 emotions out of this. Right now? Yes. Right now. Mad. Mad. Frustrated. Frustrated. Distant. Distant. उसके नीचे और एक circle है, betrayed, resentful, ridiculed. Anything in that? The pink part, right? Yes. Bitter, maybe. Bitter. Okay. Hey, one second. So the angry के बाद there is this let down, humiliated, bitter is there. Okay, bitter. And out of that, there is one more circle outside that, where it is betrayed, resentful, disrespected, violated. So many emotions are there. Anything from that there? Annoyed. Annoyed. Withdrawn. Withdrawn. Numb. Numb. Dismissive, maybe. Dismissive. Okay. Now you see, we just thought it was anger. है ना? Anger is always the tip of the iceberg. हम लोग feel करते हैं. But उसके अंदर there are different emotions, various emotions, जिससे हमें चीजें अंदर actually feel हो रही होती है. So it is mad, frustrated, distant, bitter, annoyed, withdrawn, numb, dismissive. Now you said you take out this anger on your child. Now you look at these emotions. Do you feel these emotions towards your child or towards yourself? Definitely towards myself. Exactly. तो जब हम दूसरों को बोलते हैं ना कि तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, दूसरे कुछ नहीं करते, वो मैं खुद पे गुस्सा हो रही होती हूँ. वो जो मुझे लगता है ना कि दिस पर्सन हु आई एम टेकिंग केयर ऑफ, उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है. आई एम एंग्री ऑन देम एंड आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. I am never angry at them. I am angry at myself. I am angry at myself. और वो क्या है? Madness, frustration, distant, bitter, annoyed, withdrawn, numb, dismissive. So this is second question. How does it make you feel? Now, the third Not question. accepting because I didn't get permission. That's the main feeling. Yeah, because of that. Acceptance is not there, so what would be the result of that? Yes, we will come to that. Now, you felt all these emotions because you did not get the permission.
And action kya hai? That is the third question. What did she do then? She gets angry at the child. She takes it out on the child. Now, why child? Because that is not our equal. ये ऐसा है equation यहाँ पर. We take out the anger on somebody where we feel more powerful. So what is that? Children, helps, relatives जिनको हम अपने से ऊपर नहीं मानते हैं, या वैसे कोई जो हमारी authority से नीचे रहते हैं. So we are able to take the anger out on them or our frustration out on them. We are able to do all of that. So that is her. Now, if I have to ask Parul the next question. She did not get the permission to go for Vipassana. She got all these feelings. She took it out on the child. बच्चे की कोई तो गलती ही नहीं है, तो बच्चे पे तो निकलना नहीं चाहिए. She understands this. But now, Parul, how would you like to feel? Still, you did not get the permission, you don't get the permission. But how would you like to feel if you don't want to feel all these things instead? Clarity of mind. Clarity of mind. Okay, but is that possible? You just wanted to do something and you have been denied. Is that possible to have clarity in that moment? I'm pretty sure if I go and spend 10 days, I will. No, that is not happening now. That is not happening. So that is what ACT is. I'm just teaching you how to live in the same circumstance, but change the feeling. Right. So wo nahi ho raha hai. You are not getting the permission to go for Vipassana. And still it's been told to you that, hey, listen, you have to take care of the child. You are not going anywhere. But you feeling mad, frustrated, bitter, all of that. Now, if you don't want to feel that, because that is again not helping you. ऐसा नहीं हो रहा है कि bitterness और frustration are and you are getting to go. But what is it rather doing? It is damaging your own physical and emotional health also. It is damaging your relationships with people. You know, now you don't get the permission. How would you like to feel instead if you don't want to feel angry about it? How would you like to feel rather? I mean, the way I do it right now is I just go for it at home. I do my meditations at home, 2 hours a day. I feel better after that. Yes. And accept whatever is going on. Accept. That is the whole topic today. So you accept that this is the situation, number one. अब ये acceptance out of anger आया, acceptance out of acceptance आया. Acceptance out of meditation. Acceptance आया, right? So out of meditation we get the acceptance of acceptance. Not because that meditation teaches how to accept the feelings and see the reality as is without changing. Right. So accept is one. Now, okay, you have accepted the situation, but you still feel frustrated and annoyed. If you don't want to feel frustrated and annoyed, how would you like to feel rather? Happy. Okay, happy is again a very big umbrella. Happy के अंदर क्या? Where is the umbrella? Okay, I will just show the umbrella. Happy is here. Okay. Playful, content, interested, accepted. Just in both the circles, the outermost and the middle circle. If you just have to give me two feelings. Thankful, loving. No, just give me two feelings in total. What would those be?
I don't want to feel frustrated and annoyed. How would I like to feel rather? Free and joyful. Free and joyful. Okay, so if you are free and joyful, would you have this frustration and annoyance within? No. Wonderful. Now you feel जब काफी बार ऐसा होता है कि it's like if I get slapped for the first time, it hurts. I'm like, oh shit. Second time, it hurts. Third time, it hurts. Fourth time, it starts getting numb. The same thing. When I am not heard or reciprocated the way I want it or what is good for me, I start getting numb and distant and withdrawn. But why are people saying no? You know that it is not their capability. It's not that they don't want to help, but they feel incapable of helping. They feel they might not be able to do that good job. Maybe they would be, but unke andar ek hai. Who is Bhargav Das, can you mute him? Yeah, I can, but I'm just here. Okay, got it. Yes. So yes, now withdrawn, numb, and distant ho jata hai. Now, if Parul does not want to be numb, distant, and withdrawn, how would she like to feel rather? It's the same. Happy, Happy. free, joyful. Okay, free, joyful. Wonderful. So now we have acceptance, free, and joyful. Wonderful. We'll stop this. Come back here. So acceptance हो गया हमने. अब हमें commitment के लिए कोई चीज चाहिए. That commitment which you just chose, you said acceptance, free, and joyful. So I would just ask you to make a small sentence which is called affirmation. Okay, and since you have into Vipassana, it would be easier for you. It has to be in present, starting with I am. Okay, then I am free and joyful. और एक बनेगा I accept myself and the situation around me. And second banega, I am free and joyful. Now, what is this affirmation? This affirmation is a resource for you to keep going. It's like you are in an ocean. आपके पास एक छोटी सी बोट है और समंदर में तूफान आता है. There is a storm. And now you don't know how do I. This boat cannot handle it well. But if I have extra oar, if I have that one more thing, a tool there, I cannot fight the storm, but I will stay alive. Okay, that is this affirmation. ये वो resource है. It might not be able to take you on the other side or get you, get your family to agree to let you go or whatever it is. But it will not let you become this mad, frustrated, bitter, annoyed, withdrawn, numb, dismissive, distant for long. The feeling will come and then you tell yourself, I accept myself and I accept the situation around me. I am free and joyful. When you do this affirmation to yourself, your subconscious mind starts rewiring. Yeah, I've been doing that. Yes. So that is what is ACT, guys. Acceptance Commitment Therapy. Now, say if Parul is angry and usi time pe somebody comes towards her, hey, hi Parul, she's like, don't talk to me, I'm very annoyed. So that damages the relationship also, right? Maybe that person was there to help or to understand her situation. But now, if Parul is calmer, she's calm, though she's upset, but she's calm, and the other person comes and says, hey Parul, she's like, give me 5 minutes, I'll talk to you. That saved the relationship. Maybe tomorrow she can ask the person, can you please babysit for me and I want to go somewhere, and that person is ready.
right? Maybe giving that confidence to somebody. Listen, I know you can take care of the child. It is not difficult. I know you're scared, but you can. I trust you. But when would all that come? When Parul is in her element. लेकिन जब हम emotions को accept नहीं करते हैं, when we do not accept all these things, that becomes the problem. That is the thing when we are not able to continue. हम लोग डूब जाते हैं. That is what ACT is all about. Because जब emotions आती है, emotions, it becomes like a top of the ocean, top of a sea. आप देखते हो ऊपर कितनी लहरें चल रही होती है, जो भी आता है उसको लेके चला जाता है. But we can still have that and yet have the calmness जो sea के अंदर होती है. Because if there is calmness, वहाँ life पनपती है. Acceptance that yeah, this is there. Now I just have to think of how to take care of it. जो हमें मंजीत बता देंगे, what can help us, you know, to build those resources which can help us go through these times. But पहले हमें ये चीज करनी है. So पहला क्वेश्चन क्या था? इवेंट क्या है? पारुल ने आपको बता दिया. How does she feel about it? वो भी बता दिया. What does she do then? वो भी बता दिया. Third, how would she like to feel rather? वो भी बता दिया. Then what will she do? What would be the outcome? The outcome would be she would be in more control of the situation. She would be in charge of her emotions, right? Anybody else would like to go and share their story so that I can help them in person here? Thank you so much, Parul. Thank you so much for letting us know this. And I really want to bring it up here that it is very brave and courageous to be able to tell the actual things you feel. क्योंकि हमें लगता है लोग accept नहीं करेंगे हमें अगर हम बोलेंगे. So it takes a lot of courage to let people know that, hey, I am upset. I am angry in this situation. I'm frustrated. मेरी life ही चली गई as a caretaker. Caretaking करते करते मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं option. You can't give up on them because you love them and you are missing on things. But if we think of it, we can definitely think of resources. Would anybody else like to share it with me? कोई भी नहीं? Okay. Now I have given you the 5 questions. तो acceptance commitment therapy हमें ये सिखाती है that you have to accept the situation, the feelings you feel, because अगर आप अपनी feelings को ridicule करेंगे, देखो पूरी दुनिया जहां पर हमें ऊपर वाले ने ये समझाया है that it is very important to live for people, live with people. That is how, because I am born out of a womb. एक माँ की कोख से मैं पैदा होती हूँ. अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता और एक इंसान तो शायद अंडे से निकल आते हम लोग भी, है ना? बट वी आर born out of mother's womb. That shows us the importance of having other people in our life. But वहीं पर और एक चीज ये है कि when we die alone. That is the importance ऊपर वाले ने दी है कि why is it important for you to be comfortable with yourself? जितना important है लोग रखना, उतना important है खुद के साथ भी होना. और अगर आप खुद के साथ अच्छा relationship नहीं बनाते हैं, as a patient, as a caregiver, you would not do a good job. Just imagine being a caregiver, you are just one irritated person. ये लो खाना खाओ, ये लो दवाई खाओ, oh my God, मेरी तो जिंदगी खराब है. कहाँ लगेगा वो सब? But do you do that intentionally? No, you're feeling it, right? अगर आप उसी feeling पे काम करें, behavior तो automatically ठीक हो जाएगा. That is very simple, right? So behavior हमारा बदल जाएगा अगर हम automatically feelings पे काम करेंगे. Okay, not this one. I want to show you all one more thing. Why is this coming? Okay, I'm not very good with this, guys. I have a team member जो करती है, but Sunday है, वो छुट्टी पर है. तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो. आ गया. अच्छा, नहीं, ये तो हमें मंजीत एक्सप्लेन करेंगे. मंजीत, would you like to take over?
Okay. You are on mute. You are on mute. I said, yes, definitely I will. Can you please continue sharing your screen? Yes, 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 yes. Hmm. So hi guys. Okay, so let me take it from here. Thanks, Aruba. So capacity to recover from difficult life events. Right. So there are basically multiple ways that we work on it. There are 2 or 3 things that is important. First thing comes with social support. Second is realistic planning, self-esteem, coping skills, communication skills, and emotional regulation. अभी आप में से सबने तो सुना होगा कि सोशल सपोर्ट होता है, रियलिस्टिक प्लानिंग होती है, सेल्फ एस्टीम, कोपिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब हमने सुना हुआ. But how many of us actually understand, what it means and what actually social support is? Can somebody explain to me what is social support according to the understanding that you have? Can I be one of the participants right now because मैं भी rare disease में हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ social support मेरे लिए क्या माने रखता है. Do I count? I would prefer if somebody apart from you does that, but Okay, I'll give it a shot. Basically, the thing is like you want somebody to just hear what you're going through, and they acknowledge the situation you're in. They're not looking for help or any hand holding or anything like that. But it's just like, let's say, for example, you've taken your child to an emergency room because of some seizures. You just want somebody to hear that, okay, and say, okay, our prayers are with you. Sometimes that helps a lot, saying that people have gone through similar situations, they've come out of it, and you take courage and strength out of that. okay. And how do you think that, how do you think that comes actually? Like, it is, let's say, somebody has to give that ear to you. We and listen have to you. implemented a WhatsApp support group. So anybody posts a message, people do read it, and especially in critical and emergency situations, a lot more people respond to that messages. Okay. But it is, I think what you said is definitely right. But if you have to explain it in a better words, let's say social support वो चीज होती है that is, broadly अगर हम बोले, it's basically the people that we talk to or the people on a regular basis, or typically just a network of people that we have created. अभी वो कोई भी हो सकता है. That can be friends, that can be family, that can be the colleagues that we talk to, that can be your neighbors, that can be acquaintances. Right? This is all a part of a social support group. A social support group में हम अभी बहुत specific में, like the way you said, it's very specific to one particular instance that you just spoke about, which is definitely true. But a social support अगर हमको हर जगह से मिल जाए, like, for example, even our neighbors. Now, why would a neighbor want to support you in be a social support for you? If we have a very cordial relationship with them, whether it's a neighbors or it's a family, we have a very cordial relationship wherein we listen to them and they listen to. So if somebody listens to you, they would also expect that that you would listen to them. तो अगर वो हम करना चालू कर दें, तो automatically lot of things will start. Mentally हमें क्या होता है, कोई हमारा neighbor हो या ना हो, they may actually step out to help us or may not. But if you have already created that support कि आपको, you have a very cordial relationship with them, subconsciously, mentally हमारे पास ये रहता है कि that person will
help. You may not even ask them for help at any point in time. Right? So उससे क्या होता है? It actually helps us cope with stressful situation. हमारा emotional distress, कुछ भी अगर हमको emotional, we're just feeling bad, it helps us with that, and it also helps us in promoting. Yeah. I just like, I mean, the thing is, unfortunately, with rare diseases, it's not like a one-off event, like the child got sick or child went to a birthday party or things like that. It is like 24/7. You're under stress 24/7. True. And the general feeling among families is all the support system components you're talking about, like friends, family, there is only so much they understand, that kind of trauma. It's basically like trauma. I mean, so only within, I mean, our families, the rare disease families, that we understand, like when something happens, it could be like I said, most of the times it's medical conditions, and people will kind of dismiss it, saying that, oh, it's just fever, give crocin, we're done with it. But in our mind, we are going through some 100 scenarios where this can go really bad. So that is, and I won't say the neighbors or family don't sympathize. I won't say understand. They sympathize. But can I really leave my child with them and go for a movie? I mean, other families are able to do it. I mean, they leave all the kids in one house and they get like off time. We don't get that kind of off time. One of the parents has to be with the child all the time. And that is where the social support, I would say, the boundary is like very restricted for us, in the sense like it is going to be basically a rare disease family support system. I don't know, Aruba can add to that. Yes. Yeah. So, yes, you are very right. Now, but when we talk about the social support, our social support, why do we want to have that kind of social support in such scenarios, like having your आपका neighbor आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है, आपका बाकी सब चीजें हो रही है, कि आपके रिलेटिव के साथ अच्छी जान पहचान है, मतलब आपका अच्छा cordial relationship है. What happens is like they might not understand our situation. Okay, but for example, your child is unwell and you have to take him to the hospital. म्यूट करते हैं. So yes, so तो क्या हो जाता है, आपको मान लीजिए आपको अपने बच्चे, you have to take your child to the hospital. You can take the child to the hospital, give 100% care, knowing that घर पे कोई नजर रख लेगा. Otherwise, what are you struggling? You are struggling with, I have to be in the hospital, I have to take care of the house also. गाड़ी में वो problem हो जाएगा, घर पे कोई नहीं है, पता नहीं light off हुआ नहीं हुआ. So this social support which you create around you, they might not be the people who will be able to help you deal with the situation which you have in rare disease, but they will definitely give you calmness in your mind कि घर पे कोई नजर रख लेगा, या किसी दूसरे इंसान का ख्याल रखेगा, या I'm in the hospital, somebody will bring those clothes to me. See, I totally agree that rare disease families आपस में close knit families हो जाती है. It doesn't matter to me if a family is in Ahmedabad or in Jamshedpur. We are in touch and we are helping each other with all the information we need. But that is related to what? Medicines, illness, feelings. But मेरे को आसपास अपना social support इसलिए important करना है क्योंकि people who cannot reach to me, these people can reach to me. This neighbor can reach to me. Now, a lot of people tell me that, it gets very, when they ask a lot of questions, वो समझते नहीं है, बहुत सारे questions पूछते हैं. But I guess if you are assertive and you are able to explain it to them once for all, say that, listen, we know that we have a medical condition at home, medical emergency at home, ये सब हमारे घर में है, but I don't want you to worry about it.
but I would really appreciate if we stay in touch. And I have both the side neighbors. They have no idea about my illness, nothing. But when I go to the hospital or when I'm hospitalized, मैं उनको ऐसे बोलती हूँ, अरे माली आएगा तो प्लीज उसके लिए गेट खोल देना. That's it. उतना ही करते हैं. They open the gate for the Mali. Mali comes, waters the plant. Otherwise, I'm in the hospital. I'm like, oh shit, I grew those plants up. The plants would also be dying. Now a lot of people will tell me, अच्छा rare disease के सामने ये सब चीजें आती है, because these things give you joy on regular basis. You are living with 24/7 emotional stress. तो उसके लिए आपको social support important है. As much as, जैसे for example आपने बोले एक WhatsApp group बनाया है हमने. Now in that WhatsApp group, until and unless I don't have that relaxation within me, calmness within me, confidence within me, I would not even be able to ask for help. There would be some, I might think, and I have a lot of people who tell me in therapy कि रोज रोज क्या परेशान करना किसी को, अच्छा थोड़ी लगता है रोज करना. And I tell them, नहीं हम सब तो इसी में हैं, हम तो रोज ही कर रहे हैं कुछ ना कुछ, आप बोलो तो सही. A lot of people hesitate. That is also important. Now काफी लोगों को मैं सोशल सपोर्ट ग्रुप्स में ऐसे भी देखती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो कभी कुछ नहीं लिखेंगे, कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कोई, लेकिन जब उनके घर में इमरजेंसी होगी तब आएगा मैसेज, टाक टाक टाक. That is also not good, because your one message, one smile, one condolence, one encouraging word can change someone's life. So you expect the support, be the support. It cannot be one way. So I guess that is what social support we talk about. This social support is very important. ये नहीं कि रिश्तेदारों से छिपा ली बीमारी. And I have so many people who hide it from their relatives. I'm not saying Dindora Pito's in दुनिया को के tell everybody in the world, but at least 4 लोग 8 लोग को तो पता होना चाहिए that you have something at home. Then they would be able to come and help you in the need of in the hour of need. So that is the social support we are talking about. Manjeet, again back to you. Yeah, I think you can share the screen again. Yes. So the next part of this is realistic planning or goals, setting a goal. So why does a goal have to be smart? Right. So before we get to that, I think it'll be easier to explain with an example. So if anybody here wants to set a goal, right? If you can come up with a goal that you want to set, we will work on a way that fits this exact same thing of specific, measurable, achievable, relevant, and timed. So that you get a better understanding of how the goal has to be set. So does anybody have any specific goal that you want to set? If there is no goal that you want to set, I can give you a very generic example. A generic example, जैसे कि होता है, whenever we are setting any goal, the most important thing, और जो चीज हमको याद रखनी होती है कि we always are happiest when we work to our strengths. So जो भी हम goal set करते हैं, हमेशा if you associate them with our strength, the moment you associate them with our strength, it will always be a positive outcome. Right? So जैसे कि हो गया कि हमको somebody wants to set a goal to lose weight. सबसे common goal होता है आजकल कि to lose weight. लेकिन goal क्या होगा? I want to lose weight. That is a goal. Now that goal is very, very generic. ना तो आपको खुद पता है कि आपने ना तो खुद उसमें डाला कैसे weight lose करोगे, कितना weight lose करोगे, कैसे, how are you going to achieve it? It's totally just a blank slate there. Even if you have to work on it consciously or subconsciously, you do not know what you're achieving. You do not know where is the target and how much time you want to achieve. Since you're saying, I want to lose weight, so you can make it a very more specific goal. Like, I will lose weight, let's say I will lose 2 kgs over a period of 30 days. To do that, I will, let's say, walk for 30 minutes, 5 days a week. Now, your goal आपको बहुत specific हो गया. The moment when it becomes such a specific goal that you know exactly what you need to do.
So once you're specific about going about it, you also made it measurable कि आपको 2 kg lose करना है. So when you made it measurable, that you lose 2 kgs over a period of 30 days, and you also made it achievable because 2 kgs is very realistic. If you're going to walk for 30 minutes a day, you are going to lose that 2 kgs. It is achievable and it's realistic. And again, it becomes achievable, it's realistic, and it is time related. आपने वहाँ पे टाइम फ्रेम भी डाल दिया कि आपको 30 दिन में करना है. जैसे कि कोई भी चीज हो कि फॉर एग्जांपल हमको हमेशा ना बिल्स आते हैं घर पे. Get a bill for phone, we get a bill for a broadband, we get a bill for pay any bill that we need to pay. For example, अभी देख लें कि हम बिल पे ना कोई डेडलाइन नहीं था, कोई डाल के देता कि you have to pay by this date. Do you think we'll actually go and pay that bill in that time? हम बोलेंगे यार इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है, ठीक है, जब टाइम मिलेगा तब पे कर लेंगे. Because but if there is a deadline कि पे बाय डेट है वहां पे, हमको सबकॉन्शियसली वहां पे, even if they don't say that we'll charge you an additional fee, we're still going to go that because subconsciously आपने वो डिसाइड कर लिया है कि हमको वो डेट पे करना है. सबकॉन्शियसली हमेशा याद होता रहता है कि हमको ये डेट है वहां पे. अगर वो ऐसे जेनेरिक ओपन हो जाए तो very out of 10 people, 9 people will never ever pay that bill. The same situation comes when you are setting a goal. अगर हम goal set करते हैं, at that point of time, if you make it very specific, if you make it measurable, achievable, and realistic, and then we make it time bound कि हमको ये time में करना है, automatically your subconscious mind will remind you that you need to do it in a certain way. But दूसरी चीज अगर हमने बोल दिया कि मुझे सिर्फ वेट लूज करना है, अब सबकॉन्शियसली आपने तो लेट्स से 100 ग्राम भी लूज कर लिए, लेट्स से आपने 500 ग्राम लूज कर लिया, वेइंग स्केल पे मैंने देख लिया कि मेरा वेट आज 85 है, 85 से वो 84.5 हो गया. मैं सबकॉन्शियसली माय माइंड इज दैट मैंने तो वेट लूज कर लिया, आई डू नॉट नीड टू, माय टारगेट इज अचीव्ड, क्योंकि मैंने तो उसको कुछ बोला नहीं था कि मैंने कितना लूज करना है. But if you make it very specific, it becomes easier for us to reach that goal. And out of, you make it a more targeted, specific goal, 99% of the times you will achieve it. Right? So yeah. So अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर हम रेयर डिजीज की दुनिया में कैसे कनेक्ट होता है. And I would tell you this. For example, I live with an illness, या आपका कोई बच्चा या आप खुद इलनेस के साथ रहते हैं. सो जब तक आप अपने लिए, जैसे हमें बच्चे का चेकअप कराना है, कल नहीं परसों करा देंगे, जब वो ठीक होते हैं ना, जब बच्चा ठीक रहता है तो वी आर लाइक, या खुद को भी पुश करते हैं कल नहीं कल परसों करा देंगे. सो वी ऑलवेज advise people and request people to keep specific goals for yourself. जो भी, क्योंकि रेयर इलनेसेस में ऐसा होता है कि इन बिटवीन यू आर डूइंग फाइन, एंड सिंस यू आर लिविंग विद इट एवरी डे, यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड. ठीक है, ये तो चल ही रहा है. आज मैंने क्लाइंट को बोला, आई वाज हैविंग अ सेशन विद हर एंड शी हैज टू अटेंड वेडिंग एंड शी इज आल्सो रेयर केस. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि देखो, इन दिस वेडिंग यू गेट पेन और यू डोंट गेट पेन, every 3 hourly I would want you to take medication. She's like, but I am used to 6 out of 10, तो मैं आदत है मेरी रहने की पेन के साथ. मैंने कहा नहीं, whether you get pain or you don't get pain, 3 times दिन में आपको मेडिकेशन लेना जरूरी है. Now she's like, क्यों? मैंने किसी स्पेसिफिक गोल इन योर माइंड नाउ, क्योंकि ऐसा वेट मत करो पेन आएगा तब, बिकॉज रेयर इलनेस है, पता नहीं उसके बाद क्या होगा. तो अगर हम उसको पहले ही थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे तो थोड़ा चल सकेंगे. सेम थिंग, अगर आप गोल्स बनाएंगे, बच्चे का चेकअप हो, डॉक्टर के पास जाना हो, वो मेडिकेशन मैंने 2 महीने के लिए ला रखी है, काउंट करके रखा हो, वो अपॉइंटमेंट मैंने बुक करके रखा है. These goals, if they are specific in your mind, it becomes very easy for your mental health. तो आपको जो वो याद करने की forgetfulness, हम अक्सर कहते हैं कि हमें forgetfulness हो जाता है, that would not happen. क्यों? आपके दिमाग को इतना ज्यादा कचरा अंदर भरने की जरूरत नहीं है. Even in this time and age, I prefer writing down my doctor's phone number, ambulance number, medication on a paper. Doesn't matter computer, laptop, iPad, सब है, नहीं चाहिए. क्योंकि अगर मेरे मन को शांति रहती है कि इट इज रिटन समवेयर, इफ लाइट इज नॉट देयर, बैटरी इज नॉट देयर, आई डोंट हैव माय एक्सेसरी, आई हैव द पेपर. सो सब जगह लिख के रखिए.
to keep these goals. Hanji Rahul ji, you want to say something? Yeah. This is a difficult question. We are talking about acceptance and mindfulness. So what are the strategies for setting goals in those areas? See, for example, if I'm getting angry, what would be the goal in mindfulness area regarding that particular emotions? No, we would definitely come there. लेकिन उससे पहले हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि that all these small things which we do not organize well are the things which give us more emotional imbalance than living with something on regular basis. It's very important for us to first learn emotional regularity. हम emotions को regulate कैसे करें? Okay. See, I understand there are specific emotions we feel, but those specific emotions are not always we feel because of the illness, because of the struggle we have with the ill person. No, those illnesses, those are like helplessness इसलिए feel होती है यार ये भी करना ये भी करना ये भी करना ये भी करना. जैसे एक सिंपल सी चीज है, मुझे एक बार ऐसे में वर्कशॉप कर रही थी रेयर केसेस के लिए और वहां पर मुझे एक पर्सन ने बोला कि every time we go to the doctor doesn't remember us, because उनके लिए तो हम बस एक पेशेंट है, हमारे लिए हम एक रेयर केस है, बट उनके लिए हम एक पेशेंट है, नहीं याद रहता. मैंने एक सिंपल सी काम करूँ ना, someday go to the doctor, take a coffee in your hand, और उनको बोले डॉक्टर साहब आप सुबह से पेशेंट्स देख रहे होंगे, I was buying a coffee for myself, तो आपके लिए भी लाया. Would that doctor again forget you? कितने लोग वो कॉफी लेके जाते हैं? And I do that with my doctors after 7 visits, 2 visits, 4 visits. जब मैं थोड़ा better feel करने मैं एक plant लेके जाती हूँ. This is my gift to you. I just thought it would look good on your desk. That doctor never forgets me. There is a doctor who actually calls me a coffee girl, and there's a doctor who actually calls me a plant girl. I'm not giving any big things. I'm giving very small things so that they remember me, because I need their more support than other people. अगर मेरे दिमाग में मेरे को डॉक्टर याद रखेगा तो मेरा आधा स्ट्रेस तो वही कम हो गया. That is called ACT. You are accepting that you are having challenges, and उन challenges को sort करने के लिए आप क्या करेंगे? तो goals बनाना बहुत एक important चीज होती है उसमें. And what is the next? You are on mute. Manjit, you are on mute. Okay. The next thing that we go to is self-esteem. The self-esteem, a lot of times, a lot of people confuse self-esteem to be related to self-confidence. So actually, self-esteem is very different from self-confidence. Self-esteem is something that, the way we think about ourselves and the value that we place on ourselves. Whereas confidence is a person's, like, an ability or a particular area of life, how good you are at it. Like, अगर हम कोई चीज करते रह जाएंगे, for example, if you keep on doing something on a regular basis, आपका उस चीज में confidence बढ़ता जाएगा. Self-esteem उससे बहुत अलग होता है. तो self-esteem में how does self-esteem actually come up as, the different experiences that we have had, let's say in our childhood, let's say growing up, even day-to-day life, the different experiences that we get, that those mostly negative experiences. वो negative experiences से हमारा self-esteem, let's say it falls down, or makes us feel criticized, or makes us feel depressed or sad. That is a part of self-esteem. And how do we find out if any of us have a low self-esteem? जिसका भी self-esteem low होता है, that person will always have the thing of always being very negative about themselves and always be critical, overly critical. It is not wrong to be critical about yourself. To a certain point, it's good. You can always criticize something that you have done so that you can improve on it. But if you start criticizing everything and that you're doing, or you start joking about yourself in a very negative way, and so when we start focusing on our negatives, something that we are failing at, rather than focusing on something that we are actually doing very good at, something that we're very good, like for example, in this case, in rare diseases,
You might be very good at taking care of yourself. You might be very good at taking care of somebody who needs your support. But at the same point of time, there'll be something that you may not be, because you're doing this so well, something else you might be failing at. You'll be concentrating, "Kar main ye nahi kar pa raha hu," and that you're not even focusing on the positive of it, that you're achieving something. Then we blame ourselves when things go wrong. And that is, again, a biggest sign of, having a low self-esteem. You get upset when somebody criticizes you, or when you get upset when somebody doesn't approve of something. That is a sign of having a low self-esteem. Now, how does low self-esteem actually come? This is basically, it's something that's ingrained. It's a belief that all of us ingrain into ourselves, about how we are and what we are. It's basically, sometimes क्या होता है कि हम ideals हम एक बना लेते हैं, this is an ideal. Let's say we see somebody on social media, we see somebody in the media or anywhere else, and we want to be like them. And then when we fail that, we do not reach that particular point, we start having a very low self-esteem, क्योंकि हमारा belief system जो होता है वो time पे it's failing us, because we have kept an ideal which we have very little knowledge about. Let's say, जैसे कि हमने देख लिया social media पे या media में, we see somebody who's doing very well, that they're projecting a certain lifestyle, a certain way of living, and in reality, we do not know what they have done, how they have gotten there, or if they are actually, or they're just projecting it, or they're actually there. Right? So we are just trying to see that अरे वो बंदा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? Or maybe they are doing it, their life is better, they are not facing any challenges. I am having so many challenges in my life. The moment we start having that differentiation, हमारा belief system हमेशा हमको criticize करना कोशिश कर देगा हमको, कि we start criticizing ourselves for it. Maybe I'm not doing something right. The low self-esteem comes with a lot of health issues. The people start getting depressed, anxious. You start getting people start doing substance abuse, and eating disorder is one of the most common thing which comes out of low self-esteem. Because people start overeating to compensate for how they feel. I'm feeling sad. I'm feeling depressed. Now, I'm feeling depressed for a particular reason. Now, what I do is, okay, maybe I like an ice cream. मैं ice cream खाना चालू करूँ. I like chocolates because eating a chocolate makes me feel good. The more I do it, I'm actually making my body more unhealthy and making it more difficult for me to get out of it, and I'm creating more and more challenges for myself to get out of the feeling of having a low self-esteem. Right? So अगर हमको कभी भी ऐसे लगता है that we're criticizing ourselves more than we need to, what in ACT, what we say is that always start things that are good for you. Okay, things that you're good at. So basically, what are your strengths? Start looking at your strengths rather than what you are not good at. All of us have some strengths. Start celebrating the small things, the small joy in your life. Something that you did good today, something that you achieved today. जैसे कि हम उस चीज को ना हमेशा थोड़ी से भी हम खुद को appreciate करना चालू करते हैं कि मैंने ये चीज अच्छे से की आज. Right? Our feeling about ourselves starts changing over time. Right? If there is certain negative feeling or a thought that is always bothering us, we can always look at a different way of looking at things. The same thing that same problem which is bothering us today. Let's say 10 people have this exact same issue. All 10 of us will look at it in a different way. And somebody who looks at it in a way which is more not in a problem kind of a way, but a way which can actually help them just grow or do better or see how they can actually solve it, that person is not going to feel negative about it any longer, because that person is not even going to think it's a problem over a point of time. And so that is the thing with low self-esteem. Again, exercises, meditation, talking to people,
talking to your psychologist, your therapist, friends actually helps a lot in working on low self-esteem. Right. So then moving on to the next part, which is coping. So coping mechanism, well, all of us have different coping skills. तो coping skills दो तरह के होते हैं, एक emotion focused coping skills होते हैं and एक problem focused coping skills होते हैं. तो both are actually a very good way of coping when you use the right kind of a coping skill for the right problem. It is very good. Let's say for example problem based coping skill क्या होती है? If you are in a certain situation in life, whether it's your relationship, whether it's your job, or whether it's anything else that you can actually get out of, right? And then you just decide to end it. That you cope on that particular issue by ending that particular unhealthy relationship, or something that's causing you stress or anxiety. But there are many times there are certain situations where you need to take care of your feelings because the circumstances are not in your control. Now, when the circumstances are not in your control, what you do is you have to use something called as an emotion-based coping. अगर इसका example मैं आपको दे दूं तो let's say put it like this: you have to give a presentation to somebody, right? It's in front of a large group of people, and जैसे कि वो आपको let's say for example 1st May को presentation है, आपने presentation में तो बहुत काम किया है, but as soon as the date starts getting closer, you start feeling anxious, you start feeling scared, you do not know because how good you are at it, you start getting scared of public speaking. Now this one problem can be dealt in two ways. There is one first way will be the problem focused coping. Problem focused coping में आप क्या करोगे? You will decide to hire a public speaking coach. You'll go to him, you'll work on writing a very good speech, and you will work on how to deliver it confidently. Then you will practice your speech in front of a few friends, few family members, and by the end of it, you will automatically start feeling better prepared to step on the stage. दूसरा आप क्या कर सकते हो? Emotion based coping. आप खुद को बोलोगे कि you practice meditation, you practice a few relaxation exercises, you practice a few breathing exercises, and you remind yourself that even when you're nervous, no one is even likely to notice that you're nervous. अभी इसमें क्या होता है? Both are coping mechanisms, but one of this is actually going to work and one of this is not, because one where it's a problem and you've chosen to fix that problem. The other one, you have not actually fixed the problem. In your mind, you just try to find a way around the problem, right? So knowing which coping skill to use is the most important thing of going about of finding or figuring out how to fix a problem. So there are many healthy ways of coping for emotional ways of coping. It's basically taking care of yourself. You can do a small thing like walking in a park, drinking tea, just taking a good long bath, right? Doing your hair. This kind of things can actually help you cope with a lot of stress that we feel on a regular day basis. Engaging in a hobby such as coloring, maybe even listening to music. And for example, I think what Aruba likes to do, she likes to do a lot of gardening, right? So some things like that, and everybody can engage in having a hobby like that actually helps us a lot in coping with how we feel. Rather than just trying to go around it, we try to actually fix emotionally, try to make ourselves feel better. That is what actually helps us in the long run. The next part of this is coping skills, communication skills. Now, can anybody tell me why are communication skills very important, and why is it a part of ACT?
Does anybody have any? May I? Sure, please. Actually, being a caregiver of our child who is having a rare disease, it is very important to communicate with other people in a way that they can understand what we are trying to tell them. Means I don't know whether the other person is really capable of understanding what I mean to tell what I have been through or what I'll be through. Like, Okay. I think that, see, I think if you can communicate your how you are feeling and what exactly you need from the person in a much more clear way, it actually helps the other person to understand and even know if they can do it or they cannot do it. You have an exact answer at that point of time. For example, जैसे कि बोल सकते हैं कि I tell somebody, I would have felt good if you had done this a different way, if you had done this in a particular way. That is one way of communicating. Where the person really doesn't, you're just telling him that you would feel good if it's very generic, it's very abstract for the person to understand. They have to draw their own inference from it. But if I go and tell somebody, I want you to do this for me, now the person knows this is what they need to do. They can actually tell you, yes, I can do it or I cannot do it. It's a very direct communication. Now, Hamesha na, just as we have grown older, especially our society, has made it very difficult for us to ask something directly. We have always been told कि नहीं ऐसे पूछना नहीं चाहिए, किसी को जाके किसी ऐसे directly बोलना नहीं चाहिए. That is one thing that really impacts our communication a lot, because when we start asking people for abstract things, you will start getting abstract results from it, because they will respond to it based on their understanding, not from what exactly you need from them. Now this is two ways. You cannot always ask somebody for something. It's always has to be the other way as well, where you're listening to them and you're also putting in that effort to give them what they need from you. Right? If you're having a very clear communication with somebody, it helps us in reducing our stress. It helps us in reducing anxiety, because just say I think Aruba was giving an example earlier, like when she's hospitalized, she asks her neighbors, to let the gardener in. Right now, when she tells, because she's giving a very direct thing, can you do this for me? तो उसको वो भी बोल सकती है कि now that way she has told them, when she's told her neighbors, she doesn't have the stress or anxious. She's not anxious anymore that gardener आएगा तो क्या होगा. But if in general in the passing she says, अरे यार अगर कोई gardener आएगा तो उसको आप ऐसे I would like it if you just let him in. तो उसको भी exactly पता नहीं है कि कब let in करना है, कब क्या करना है. आपने बस उसको generally आपने एक statement कर दिया. That person is not really going to be sure what exactly they have been asked to do. And they are going to do, even if they really want to help you, they're going to do it based on their understanding. Right now, having a good communication with anybody, whether it's a friends, families, neighbors, or our partners, it helps in multiple things. It helps us in creating a stronger and more satisfying relationship. Because if your partner is being able to understand you, your friends are being able to understand you, and they know exactly what you expect from them and what they expect from you, your relationship is only going to get stronger, because there is no यहाँ पे extractness रहता नहीं है. Let's say, for example, I tell somebody I need to do XYZ. I want to go and meditate for a couple of days. Now, going for meditation for a couple of days is going to make me feel better, and this is if I'm going to feel better, this is how it's going to impact my day-to-day life, and this is how it's going to impact our relationship. Right? That way, the person has a clear understanding of why I'm saying I want to do it. But if I just say, I want to do this, and because it makes me feel better, what is it in for the other person for them to actually give it to you? Right? Because if you are asking somebody to help you with something,
it always has to be that, it's any relationship is always a give and take. If they see that, there's some benefit for them as well, they are always going to be more than eager to help you, because if they see that you are benefiting in a certain way and that is benefiting them in as a result, people will be willing to help you. And I think this is communication. The next part is emotional regulation. I'll take that. Okay. Thank you so much. Hey guys, तो क्या मिला अभी तक आप लोगों को? So he talked about why is it important for us to have the specific goals, direct communication. Communication में ना मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी. Sometimes when we talk to people, what we do is we are like, हम उनको बोलते हैं कि तुम मेरे लिए तब वहां नहीं थे, तुमने ये नहीं किया, तुम जल्दी आ सकते थे, तुम बच्चे का ख्याल रख सकते थे, तुम ऐसा कर सकते थे. ओके, नाउ इससे ना ये सोल्यूशन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन नहीं है, ये फाइट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है. आपने क्या बोला? तुम वहां नहीं थे. उसने बोला अरे मैं तो ऑफिस में था ना. ठीक, तो सोल्यूशन तो नहीं आया ना. So what we would tell you is to focus on solution oriented communication. How? Saying that, hey, listen, आपने बोला था आप 5 बजे आओगे और ये काम करोगे, आप नहीं आए 5 बजे तक, इस वजह से मेरा ये मिस हो गया and I'm feeling upset about it, तो मुझे अभी बात नहीं करनी है. So आपने क्या किया? आपने उनको बोला कि आपने जो बोला था और फिर मैंने मुझे जो करना था और अब वो नहीं हुआ, उस वजह से मैं अपसेट हूँ, अब मुझे बात नहीं करनी, अभी मुझे शांति दे दो. So what happens in this direct solution oriented communication is you are able to what पहले जो somebody said it, I missed the name, who said it, that Nilambari. She said that it's very important for us to make other people understand because they might not be. And in that process, you also have to talk about your experiences, because just because your child has a rare illness, somebody else's child has a rare illness, it might not be true they have the same experiences. Maybe you are better capable of handling things and they are not, vice versa. So what you have to always start with, I feel you could have done this, but you tell me, I felt this. Always use I statements. I statements is a very good communicator. You will be able to express yourself better. Now, more importantly, what I want to emotional regulation में जो हम बात करेंगे अभी, emotional regulation में ना सब आपको बोलेंगे देखो ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो. सब लोग आते हैं ज्ञान देने के लिए. Especially when you live with an illness for a long time ना, सब लोग उनको लगता है अरे फीवर है कोई बात नहीं, मेडिसिन दे दो, ये कर लो वो कर लो, but they don't understand उससे एक पैरास्टामोल से कितना फर्क पड़ता है हम लोगों को. Right? Now, what healthy boundaries? जहां पर मुझे ये समझना है मेरा खत्म कब होता है और आपका शुरू कब होता है. And for healthy boundaries, you need confidence. और कॉन्फिडेंस आएगा बार बार प्रैक्टिस करने से. पहली बार शायद नहीं बोल पाओगे किसी को, पहली बार शायद हेल्प भी नहीं मांग पाओगे, हेजिटेट करोगे, गिल्टी फील करोगे. So keep practicing it. It's very important for you to practice it. Keep practicing it until you get that confidence. Second thing, हमेशा याद रखो, it is your struggle. People might understand it or might not understand it. Put that in your head. Okay, it is your struggle. और उस struggle को आपने choose किया है. अब आप मुझे बोलेंगे ऐसे कैसे, बच्चे को बीमारी है हमने कैसे choose किया? काफी पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, नहीं ख्याल रखते. कोई ऑर्फनेजेस में छोड़ता है, कोई हॉस्पिटल में छोड़ता है, कभी रिश्तेदारों के पास छोड़ता है, कोई ख्याल नहीं रखता है. But you are choosing to take care of them. So if you are choosing something, you become powerful. Automatically power आता है. अगर आप कोई चीज हेल्पलेसनेस से करते हैं, या तो इस वजह से आप कर रहे कि दुनिया क्या कहेगी, oh my God, people will not look at me in a good light. But I don't think so that becomes true in rare cases or chronic illnesses. You have chosen this struggle. Accept करो struggle को. That I have a choice to get out of this struggle. जैसे पारुल के पास choice है, घर में लड़ाई करके उठ के चले जाना विपासना. क्या वो पीछे से बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे? रखेंगे. जैसे आएगा उनको रखना.
बट शी इज चूजिंग कि वो अपनी विलिंगनेस के साथ वो मुझे बोले कि हाँ जाओ हम ख्याल रखेंगे. शी इज मेकिंग अ चॉइस हियर. दिस इज व्हाट ACT इज अबाउट. Acceptance that what I am doing, it is my own choice. मुझे कोई यहाँ पे गन रख के नहीं करवा रहा है कोई चीज. मुझे चॉइस है to take care of this child the way I want or not to take care of them how I want. But in all this process, you can only and only do it when you take care of yourself. Emotional resilience लाना बहुत important है आप सबके लिए. You know, जब एक माँ को बच्चा होता है, तो there is something called baby blues. बेबी ब्लूज क्या होते हैं? 3 से 4 हफ्ते के लिए मदर का मूड थोड़ा अपसेट रहता है, इरिटेट रहता है, एडजस्ट कर रहा होता है एक नए रिस्पॉन्सिबिलिटी को. तो डॉक्टर्स कहते हैं बेबी ब्लूज आर वेरी नॉर्मल. अगर 10 औरतों को बच्चा होता है, 10 में से 7 से 8 को बेबी ब्लूज होते ही है. बिकॉज एज मच एज वी वांट टू से चाइल्ड बर्थ इज अ सेलिब्रेशन, इट इज इतना ज्यादा सेलिब्रेशन तो ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर अब उस बच्चे को कोई बीमारी है तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना. तो वो बेबी ब्लू जो 7 महीने का है, काफी लोगों को वो बढ़ के पोस्टपार्टम डिप्रेशन बन जाता है. और रेयर केसेस में मैं देखती हूँ मदर्स को या फादर्स को वो डिप्रेशन काफी देर तक चलता है. और उसको हम कहते हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन. जहां में उसमें आप फंक्शन पूरा कर रहे हैं, आप वर्कaholic भी है, बच्चे का ख्याल भी रख रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, रिश्तेदारी भी निभा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट अंदर से एक एम्प्टीनेस है. और उस एम्प्टीनेस को हम क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजें, वो हेयर कट टाइम पे कराना, टेक अ बाथ, टेक दोस 5 to 7 minutes with yourself, एक्सेप्ट व्हाट यू आर फीलिंग. हाँ मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, ओ माय गॉड, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मुझे बहुत शेम आ रहा है, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही है. टेक दोस 5 minutes, हैव अ सिप ऑफ वाटर, मेडिटेट, एक्सरसाइज, गो फॉर अ मूवी. अगर 2 पार्टनर्स, एक बच्चे को ख्याल रखेगा, एक जाके आएगा. इफ यू डोंट रिचार्ज योर सेल्फ, you will not be able to handle it for long. So it's very important for you to take care of yourself. But आप टेक केयर कब कर सकते हैं? जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी लाइफ डिफिकल्ट है, रादर देन क्रिब करेंगे. क्रिब नहीं करना है, क्योंकि जहां पर क्रिब आया वहां पर आपकी जो क्षमता है वो नीचे गिरेगी. दैट इज व्हाट इमोशनल हेल्थ इज अबाउट. हमारा इमोशनल हेल्थ हमारे थॉट से, हमारे फिजिकल हेल्थ से गिर जाता है. एंड अगर आपका इमोशनल हेल्थ गिरे, आप लोगों में से कितने लोगों ने स्काईज पिंक मूवी देखी है? यू कैन रेज योर हैंड. द स्काई इज पिंक. बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी मूवी, पारुल ने देखी है. एनीबडी एल्स? उसमें आपने देखा कि मदर को कैसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं बिकॉज शी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ. दैट इज द रियलिटी. That is why you need to take care of yourself. And when you take care of yourself, don't feel guilty about it. Look at the bigger picture. So ये strategies मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन दिखाए हैं, that is to reframe your thought process. तो इस के सेशन के बाद हम ये PPT भी आपके साथ शेयर करेंगे जो हुआ है अभी. और दूसरा इमोशन चार्ट जो है वो भी मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ. तीसरा, यू विल हैव एक्सेस टू माई email ID. आप लोग मुझे कभी भी लिख सकते हैं इफ यू आर फीलिंग समथिंग एंड यू वांट टू हेल्प, you want help with that. I would try my best to help you with that. Now I would love to hear the questions if you have any, so that I can answer them. Manjit can answer them. So is there anybody who has a question about ACT? राहुल जी, आपका कोई क्वेश्चन? Yeah, basically the thing is like, where do we start? In the sense like we are already in this, I won't say mess, but like quagmire, like a swamp. So there are a lot of emotions, there are a lot of issues with relationships, like communications, a lot of issues, even in social situations. So the thing is like, what is your suggestion or strategy to
kind of divide and conquer, like pick small battles first and then go towards the big problems. Yes, true. So where do we start from? We start from learning good communication, healthy communication. Okay, that would be and if it helps, I can definitely write a proper set of an email जहां पर आपको communication के बारे में मैं सब कुछ बता. Language does not matter, guys. It is how you are talking, but that talking will come from inner confidence. जब अंदर एक acceptance रहता है ना कि yes, this is what it is. Oh, people might not understand it. Twins बच्चे होते हैं माँ के, but उनकी same thought process नहीं होता है ना? They look at the experiences differently. So why are we expecting that family में दूसरा person भी same तरीके से वो बात समझेगा? That is one thing. Second, why are we expecting कि हमारे relatives और हमारे पड़ोसी उस चीज को समझेंगे? Everybody has a capability. उनकी वो capability नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के, ऐसा नहीं है. एक सिंपल सी चीज है यहाँ पर. ऐसा नहीं है कि I am like, oh, I can understand that struggle, but I don't want to. No, people don't have capacity. एक बार मैं कॉर्पोरेट में वर्कशॉप कर रही थी और उसमें एक लड़के ने बोला कि मैम, आई नो माय बॉस डज नॉट लाइक मी. मैंने बोला, एंड हाउ डू यू नो दैट? बोला कि उन्होंने मुझे एक पीपीटी बोला था करने के लिए, मैंने कर लिया. फ्राइडे को मैंने दोपहर में भेजा, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, आज मंडे है, एंड माय बॉस हैजंट येट रिस्पोंडेड टू मी. I said, so what does that say? That says that PPT is not good. He has not liked it. I said, okay, और क्या है आपके पास सबूत response करने के अलावा? And he said that I saw my boss in the morning. I said good morning to him, and he did not respond back to me. थोड़ी देर में boss आ गए उसी workshop में. I requested the boss. I said, would you please tell me, did you like the PPT of this person? बोला, it is fantastic. मैंने बोला, फ्राइडे आफ्टरनून से मंडे हो गया, you haven't responded back. बोला, oh, I didn't get time. In fact, after this workshop, I wanted to, call him to my office and let him know that. Number one, assumption. Second, मैंने बोला, but he saw you in the morning and you said you didn't respond to the good morning. And he said, Aruba, don't laugh at me, but I was having loose motion, so I was rushing to the washroom. I did not look at him. See? हमें लगता है कि लोग हमें इग्नोर करते हैं, हमें लगता है लोग हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, बट उनकी जिंदगी में अलग टेंशन्स होते हैं. मेरे लिए शायद हॉस्पिटलाइजेशन बड़ी बात होगी, दूसरे के लिए चप्पल खो देना बड़ी बात होगी. Who are we to say किसके लिए क्या बड़ा है, किसके लिए क्या छोटा है? तो जहां आपको लगता है लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वहां आप ये सोचा करो कि उनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है समझने की. जहां आपको लगता है लोग मेरे पीछे से बात करते हैं, वहां आप सोचो उनकी छोटी सोच ही जब उतनी छोटी है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा दुनिया में, है ना? दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल विल कम व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ. एंड हाउ डू यू वर्क ऑन योरसेल्फ? बाय कंटिन्यूअसली connecting with yourself. What I am feeling, why am I feeling it, what is the reason behind it? That is the reason you all need to be in touch with a mental health professional. Get that support where you can just, honestly talk about yourself. Yes, Rahul ji. So would it be fair to say the 5 questions which you posed earlier, like what happened, event, how you responded, how you felt, if we maintain some kind of a journal on those 5 questions, we can reflect on it at a later stage? Yes, every day, when people come to therapy, and I work with a lot of rare cases, मेरे पास muscular dystrophy, cystic fibrosis, chronic pain, Alagille syndrome, बहुत सारी diseases है लोगों को, and they are working with me. So I make it compulsory for them to make a chart. एक एक्सेल शीट में एक चार्ट बना दो, एंड उस चार्ट में हम रोज शाम को लिखें. Just write it down for yourself every evening, 1 or 2 events. अगर एक इवेंट है तो एक, और उसके बाद उसको ऐसे डाइसेक्ट करें. What happened? How did I feel? How did it make me do things? How would I like to feel rather? And how would that help me? Because वो जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो आपको नेक्स्ट टाइम याद दिलाएगा. Oh, if you do it this way, it will help you differently. Don't shout at the child and get the things done.
consistency, commitment, action, all these things. So I would say, I would urge all of you to make a chart of it in an Excel sheet or notebook, whatever you can, and write it every day. That would be number one. Number two, do breathing meditation every day, even if it is for 5 minutes a day. I'm not asking you for an hour or 2 hours. I'm asking 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening. And जो illnesses से आता है वो बहुत ज्यादा grief यहाँ आता है heart में और हमारे solar plexus में, हमारी tummy में, ना. Keep your 2 hands on your heart and on your stomach and breathe in through your nose and breathe out through your mouth. I can just highlight it so that you can later on see it. It's like यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है. The grief comes here. It settles down here. So keep your hand here. Close your eyes. Inhale through your nose. Exhale through your mouth. That would be second exercise. Now in this one itself, आप ये imagine कर सकते हैं कि ये कौन सा emotion है जो आज मेरे यहाँ stuck हो गया है. It is anger. It is frustration. Okay, what color is this? It is blue. Blue color का emotion stuck हो गया है, बहुत है मेरे अंदर. So what I would do is I would imagine this blue color in my heart and in my stomach, and I would release it. Until the blue color सारा बाहर आ जाए. You can practice this every day. Now मैंने बोला blue color, आपके लिए कोई भी दूसरा कलर हो सकता है. It is not compulsory. किसी के लिए black, किसी के लिए red, किसी के लिए grey, किसी के लिए white. कोई भी इमोशन, मैंने एंगर बोला, फ्रस्ट्रेशन बोला, शायद आपको सैडनेस आ रहा है, शायद आपको डर लग रहा है, शायद आपको वरी हो रहा है, कोई भी इमोशन हो सकता है. मैं इमोशन चार्ट भेजूंगी. ये तीसरा एक्सरसाइज होगा आपके लिए. चौथी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेनेवर यू गेट टाइम स्लीप. मुझे पता है कि 24 मतलब आराम से 8 घंटा एक साथ नहीं मिलता है ना. जब आपको टाइम मिले आंखें बंद करके सो जाइए, क्योंकि जब हम सोते हैं उस टाइम हमारी बॉडी में बहुत हीलिंग होती है. इसलिए हम कहते हैं ना, बच्चों को सोने दो, बच्चे बढ़ते हैं सोने से. तो जब आप सो जाते हैं हमारी बॉडी में हीलिंग होती है. ऑटोमेटिकली मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन इश्यूज को जाने देता है जो हमें परेशान करते हैं. सो जस्ट मेक श्योर यू गेट सम स्लीप, साउंड स्लीप. इसके अलावा स्क्रीन टाइम प्लीज कम करें. आई नो हम लोग बहुत स्क्रॉल करने लगते हैं, उसको हम एमलेस स्क्रॉलिंग कहते हैं. एमलेस स्क्रॉलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाए. बट एक डिस्ट्रैक्ट करना होता है और एक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है. अगर आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज की बुरी आदत लग जाएगी. लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करेंगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो प्लीज स्क्रीन टाइम कम करें, सोशल मीडिया को थोड़ा कम देखें. लोगों की हॉलीडे जो आप देखते हैं ना, मतलब जिन फैमिलीज में अनवेल लोग नहीं होते या क्रॉनिक इलनेसेस या रेयर इलनेसेस नहीं होती और हमें लगता है अरे वाह कितनी अच्छी हॉलीडे मना रहे, कितना कुछ कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, न्यू ईयर्स पे ना I was like having a couple therapy session with a couple who were sitting in Paris. वो न्यू ईयर पेरिस में मना रहे थे, वहां लड़ाइयाँ चल रही थी, सेशन मेरे साथ कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए. एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स आ रही थी मुझे भी ऐसा लग रहा था मैं वहां क्यों नहीं हूँ. ये सब का हाल है. जो लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं वो बहुत ग्लिम्पसेस ऑफ लाइफ है उनके, उसको सच ना माने आप लोग. मैं भी यहाँ पर अभी मेकअप करके बैठी हुई हूँ, मेरे बाल आप सोच रहे होंगे क्या हेयर स्टाइल बनाया है. ये एक आयुर्वेदा ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें उन्होंने बोला 10 दिन बाल नहीं धोने हैं, तो मैंने उसको चिपका के हेयर स्टाइल बना दिया, किसी को पता ना चले. तो ये सब है. कौन बोलेगा कि अरूबा को बीमारी है, अरूबा बीमार है, अरूबा आईवीज लगाती है. कौन मानेगा मुझे कि सुबह में 6 बजे उठ के आयुर्वेदा सेंटर जा रही हूँ, वहां ट्रीटमेंट ले रही हूँ, वहां से आके नेबुलाइज कर रही हूँ, क्या सारी बातें बैठ गई. You might not even know what is happening in people's lives. You might compare yourself. But मुझे लगता है मेरी इलनेस ने मुझे एक बेटर इंसान बनाया है.
and I wouldn't want it in any other way. क्योंकि वैसे कोई जिंदगी तो और देखी नहीं मुझे मैंने बिना बीमारी के, लेकिन इस बीमारी की वजह से I value relationships, I value time, I value myself, I am kind. तो आप लोगों में भी तो बहुत अच्छी क्वालिटीज आई होंगी ना. आई नो बीमारी नहीं होती तो शायद और भी ज्यादा अच्छा होता, बट आई डोंट थिंक सो अगर बीमारी नहीं होती हम कोई अच्छे होते. मुझे नहीं लगता इतना एम्पैथी, इतना काइंडनेस, इतना सपोर्ट एक दूसरे के लिए होता हमारे अंदर, इतना पेशेंस होता, क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ रेगुलर लोगों में वो सब चीजें. सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी देयर. मेक अ चार्ट ऑफ दोज 5 क्वेश्चंस, jot your emotions there, try to reprogram yourself, number 1. Number 2, write me an email anytime. आप सबके पास मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल लिखिए वापस और आप उसको करें कि यू नो आई विल हेल्प यू देयर. थर्ड, making sure that it is your journey, it is your struggle. People might accept it, not accept it, that is all right. Fourth thing, taking care of yourself. वो छोटी छोटी naps लेना, meditation करना, gym जाना, movie जाना, सो जाना बहुत important है. गिल्टी फील ना करें. आपसे ज्यादा बेटर कोई अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता था. You guys are doing an amazing job. So you deserve that time for yourself. चौथा, good communication. It's very important to have good communication. If you don't learn that, it will be very difficult for you to put your point across. और फिर डॉक्टर को कॉफी जरूर दीजिएगा या किताब जरूर दीजिएगा या प्लांट जरूर दीजिएगा. They would remember you. Yes, for them we are just a patient, but for us we are the world. Done? Thank you, Swapna. Anything else, guys? Rahul ji, can I do anything else? I think you have given us a lot to think about and very practical information. So let's work on this and hopefully we will get back to you in case we get stuck somewhere and we are not moving forward. That's the main thing. Thank you so much. Thank you so much, guys, for being here. And as I said, डेली डोज के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. डिटेल में आप मुझे ईमेल पे लिखिएगा, प्लीज इंस्टाग्राम पे मत लिखिएगा, वहां पर आई वुड नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड वेल. बट आप ईमेल लिखेंगे, मे बी नॉट दैट डे, नेक्स्ट डे आई वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड. अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, इमोशनल हेल्थ कंपनीज में कंपल्सरी कर दिया है. सो एनी वन ऑफ यू who has been working with corporates, you get insurance for mental health now. So start taking therapy, get in touch with the counselor, because I know therapy is expensive. You know, that is there. I am trying in my company to make it little affordable, but I'll be very honest, वो उतने experts नहीं है rare cases के साथ. Right? So, but companies are providing insurance. Find out from your insurance people कि क्या वो mental health के लिए pay कर रहे हैं. And please make it compulsory for yourself to get into therapy as well. And बाकी विपासना करें, meditation करें, जो भी आप कर सकते हैं. Thank you, Parul. Okay, guys, take care. Thank you, Aruba. Thank you, Manjeet. Yeah.